ma'am, and Mr. Rishikesh Joshi. बंद की थी मैंने सारे पेन, लेकिन उधर क्या मैं नाम ये नहीं पेन नहीं है सर, यहाँ पे पेन नहीं है। Subject society members, while coming on the dais, please collect your roses. These roses are your felicitation. Thank you. Now the Department of Botany. स्टूडेंट्स जो कमिटी मेंबर्स है वो पहले स्टेज के सामने खड़े रहेंगे। आपका जो रोज है वो लेंगे और उसके बाद 1 by 1 ऑन द डाइस फॉर द फोटोग्राफ आपको खड़े रहना है। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Department of Botany, Patron Honorable Principal O.S. Deshmukh Sir, Chairperson Dr. Rupali Mahatode Ma'am, Convener Dr. R.P. Sonwalkar Ma'am. Office bearers, President I. Riya Kumari, Riya Singh, SEM 5th, Vice President Soumya Yadav, Tanvi Mandale, Shravani Raut, Umesha Raut, Executive Members, Payal Dharpure, Kalyani Sahare, Madhura Rajput, Harshali Thawar, Sapna Mishra, Yana Gawande, Shraddha Bagade. Thank you. Next is Department of Chemistry. After chemistry, computer science. Good afternoon, everyone. I am the student of Department of Chemistry. Patron is Honorable Dr. O.S. Deshmukh Sir. Chairman is Dr. P.S. Utale Sir.
Convener is Dr. P.N. Deshmukh ma'am. And I am the president. The vice president is Sanjana Gaikwad. Secretary is Shreya Wankhede. Joint Secretary Amit Shinde. Treasurer Advait Shinde. Executive Member Tilak Gunde. Executive Member Madhvi Gurnule. Yogeshri Atkare. Harshada Raut. Antara Moharil. Mahima Katar Pawar. Suhani Chalkure. Department of Computer Science. Good afternoon everyone. Department of Computer Science Office Subject Society for the session 25-26. Patron Honorable Principal O.S. Deshmukh Sir. Chairperson R.N. Jugele Sir. Convener M.T. Ranjari Sir. I, President Vishaka Khiani. Vice President Ms. Vishaka Dhanne. Secretary Prerna Patil. Joint Secretary Harshni Kaur. Treasurer Sakshan Gugalkar. Treasurer Executive Members Bhavik Diware. Manit Sangani. Nikhil Tiwari. Manmit Kaur. Yashvi Bisen. Bhakti Vyas. Parth Sukhdev. Next is Department of Electronics. Department of Electronics. Electronics. Good afternoon everyone. I am Anjali Mishra, the President of Electronic Department. The Electronic Department is the hub of innovation where creativity meets technology and ideas turn into impactful projects. Now, I would like to invite the proud pillars of our Electronic Department onto the stage. Our patron, respected Principal Dr. O.S. Deshmukh Sir, Chairman, respected Dr. J.K. Keche Sir, Convener, Ms. Pragati Bire Ma'am, Co-Convener, Mrs. Sonu Maske Ma'am, President, myself Anjali Mishra, Vice President, Ms. Akshita Nagpurkar, Secretary, Mr. Kaushal Bilkar, Joint Secretary, Mr. Rudra Purhe, and the executive members, Ms. Sanjana Yadav, Ms. Grishma Randeve, Ms. Saima Tabassum, Ms. Alkama Tahura, Ms. Unnati Tirpure, and Ms. Kashish Tarpin. Thank you.
Next is Department of Geology. Good afternoon, everybody. Department of Geology, patron, respected Professor O.S. Deshmukh sir, Chairperson Mr. M.D. Phalke sir, Convener Miss Dr. P.B. Zamarkar Madam, Co-Convener Miss A.D. Fulari Madam, Vice President Gunjan Thengdi, Secretary Prachi Peshutawar, Joint Secretary Tanvi Raut, Treasurer Riddhi Rajput, Executive Members Arya Hatwar, Divya Mahatpure, Samaditi Bhaladhare, Piyush Kursange, Ojas Oak, Shreya Dongre, and Aditya Pohad. Thank you. Next is Department of Mathematics. Good morning and good afternoon everyone. Myself Shweta Rathod. I am from Mathematical Society. I am introducing the dedicated individual who will be the office barrier of the Mathematical Society for the year 2025. Patron Dr. O.S. Deshmukh sir, Principal of Science, Shivaji Science College. Chairman Professor Kalpana Pawar, HOD of Mathematics Department. Convener Dr. Vidya Chauhan ma'am. President myself Miss Shweta Rathod. Vice President Miss Rajeshri Vardhe. Vice President Riya Ramteke. Secretary Mr. Aday Singh. Joint Secretary Miss Kanak Jaiswal. Mr. Atulya Talwakar, Miss Priya Singh, Executive Member Miss Anjali Mangeshwar, Mr. Prithviraj Chandere, Miss Lipisha Yole, Miss Samruddhi Pathak, Miss Satak, Mr. Satak Akre. Thank you to all of you. Next is Department of Microbiology. Good afternoon, everyone. I am the student from Department of Microbiology. Chief Patron, Honorable Principal Sir, Professor O.S. Deshmukh. Patron Coordinator, Professor Atul Bogre Sir. Head of Department, Pranita Bulhane Ma'am. Convener, Miss Sanchari Sarkar Ma'am. I, President
President Ms. Tanushree Hazare, Vice President Mr. Karthik Kadu, Secretary Mr. Bhavesh Khopra-Gade, Joint Secretary Ms. Janvi Chaudhary, Treasurer Mr. Dattaraj Gole, Executive Members Ms. Alisha Dongre, Ms. Aparna Purewal, Ms. Aditi Bhanankar, Ms. Valerie Usatkar, Mr. Amitesh Pal. Thank you. Next department is physics. Good afternoon to everyone. Department of Physics, AGM, Dr. O.S. Desmukh Sir, Shivaji Science College, Nagpur. Chairman, Professor S.W. Anwani Sir, Professor and Head of Department of Physics. Convener, B.T. Kumhare Sir, Assistant Professor. I, President Shubham Jhalke, Vice President Sanika Varpatkar, Secretary Jayashree Yadav, Joint Secretary Pratik Upasak, Treasurer Ashish Devkar, and now the executive members Vishaka Minavi, Yugansh Kanoje, Divya Vatkar, Paras Atram, Mayank Dongre, Vanshika Gajre, Vihang Mishram, Archit Wagh, Serena Elik, Arya Borkar. Thank you. Next is Department of Statistics. Be ready. Department of Statistics. A very good afternoon to everyone present here. I am Payal Gupta, the President of the Statistics Subject Society. Let me introduce all the office bearers. Patron, Honorable Dr. O.S. Deshmukh Sir, Chairperson Dr. Shilpa Gira Ma'am, Convener Dr. Sheetal Paliwal Ma'am, President myself Ms. Payal Gupta, Vice President Ms. Mrunali Bhingare, Treasurer Ms. Niharika Lakote, Secretary Mr. Gagandeep Singh, and the executive members are Ms. Namrata Raut, Ms. Firdosh Kazi, Mr. Parth Mete, Ms. Kalash Shah, Ms. Akshata Dekate, and Ms. Samruddhi Sukhdev. Thank you. Next is Department of Zoology. Good afternoon, everyone. Respected Patron Dr. O.S. Deshmukh Sir, Chairman Dr. A.D. Bobde Sir, Convener Dr. Mrs. Sheetal Deshmukh Ma'am, Co-Convener Ms. Manshi Gawande Ma'am, I, Sanvay Sattute, as the President of Zoological Society, take great pride to announce the office bearers of our society: Vice President Sanika Bokde, Secretary Deepesh Yadav,
Joint Secretary Rakhi Chauhan, Treasurer Atharva Durupkar, Treasurer Aryan Tamgade, Executive Members are Yashasvi Ghaiwat, Kritika Jamgade, Vansh Gawai, Prajwal Kurekar, Prachi Aglave, Tasneem Fatima Khan. Thank you. Next is Department of Language. Be ready. A very good afternoon to everyone present here. Patron Dr. A.S. Deshmukh sir, Chairperson Amar Jaiswal sir, Convener Dr. Sanjeevni Madekar ma'am, I President Shagufta Basit, Vice President Saloni Patle, Treasurer Falguni More, Secretary Neha Ashtikar, Executive Members Roseanne Nawaz, Aditya Akhre, Kanhaiya Gupta, Tanmay Thakre, Nazia Parveen, Lavanya Deshmukh and Simran Ailani. Thank you. Last department is Department of Physical Education. Good afternoon everyone. Department of Physical Education, Subject Society 2025-26, Patron Honorable Dr. O.S. Deshmukh Sir, Convener Professor R.Y. Deshmukh Sir, HOD of Physical Education, myself Vice President Harshita Suthar, President Nanika Parihar, Secretary Avantika Lokhande, Joint Secretary Aditya Akhare, Treasurer Neha Mate, Executive Members Gagandeep Singh, Ujjwal Chore, Manoj Sanghani, Hansika Jamgade, Dattaraj Gole, Minanshu Maras Khole. Congratulations on newly committee members. Now it's a time to take oath. I call Grishma Randive for the same. Good afternoon everybody. My name is Grishma Prashant Randive, representing Electronics Department. I am here to take the oath with all of us together. I would request to all the committee members to stand on their positions and raise their right hand up to their shoulders and repeat after me. I do solemnly take the oath that I shall faithfully
serve the purpose of subject society of the college. I shall try to make the people aware of the importance of science for the well-being of mankind. Thank you. Thank you, Grishma. सफलता वो नहीं जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो नहीं जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होती है जो हम चुनते हैं, सफलता वो होती है जो हम चुनते हैं. This quote is perfect for our chief guest. Students, I am excited, thrilled and felt honored to introduce our esteemed chief guest, Dr. Gajanan Muratkar sir, well known as Grassman of India for his pioneering work in grasslands management and conservation. Sir has dedicated his career in studying and revitalizing grasslands, also recognizing their crucial role in supporting wildlife, soil health and overall ecosystem balance. He emphasizes that grasslands are often overlooked in conservation efforts despite their importance. Sir developed a unique approach to grassland management, focusing on the use of native grass species, that is, Muratkar method. It involves studying soil parameter, in identifying local grasses and weeds, creating seed banks and mother beds, and systematically introducing native grasses to restore degraded areas. Muratkar sir work has significantly important and improved the productivity of grassland and thus providing essential food and shelter for the herbivorous, thus supporting larger population of wildlife. Muratkar sir is a real conservation hero and has many awards and recognition to his credit. I would like to mention here, sir got the Century Green Teacher Award and Satpura Landscape Tiger Partnership, that is SLTP Conservation Award. In addition to this, awards from the Department of Forest from Chhattisgarh, Telangana and Tamil Nadu. Sir is committed to sharing his knowledge and expertise, regularly conducts workshops and training programs for forest staff and officers, empowering them to improve effective grassland management practices. His efforts not only revitalize grasslands but also inspired others to recognize the value of ecosystem, which is often underappreciated. We are fortunate that our college faculty, Dr. Sarang Dope, along with the students, completed one project with Dr. Muratkar sir and published one book. Currently, sir is working on one project cost rupees 400 lakhs in Thiruvananthapuram, funded by Japan. So, without wasting time, please join me in welcoming today's guests to grace the occasion with their valuable words. Sir, please.
Good afternoon to everybody. Today's function for the Science Association inaugural function. Chairperson for this program, Dr. O.S. Deshmukh sir, Principal of this college. Professor Bobde sir, Head Department of Zoology. Dr. Patil Madam Bhagat, who introduced me and give the introductory speech for this society, and anchor of this program, Dr. P.N. Deshmukh ma'am, and who introduced me very well on the occasion of this Science Association program, and respected head of the department of the different zoology, botany, chemistry, microbiology, statistics, physical education, languages, respected colleagues, office bearers, and last but not least, my dear students. I am very happy to hear that all science subjects societies are inaugurated under the guidance of Honorable Principal of this college, and I am very happy to know that college has such an organization in a same single dais. All societies are inaugurated in a single day on a single platform. So big hand for this organization. And on this occasion, I declare that all societies are inaugurated for this academic year 2025-26, and all the best for the future academic research interdisciplinary work for this session, and I hope that you will do the best in collaboration with the and under the guidance of our respected head of the department, office bearers, and under the guidance of our principal sir. So I will take only 40 minutes. My today's speech is, I will not deliver a lecture. I will share my field experience. Okay, so I will not deliver a lecture on this occasion. I will share my field experience. I am working with the forest department from last 20 years, last 28 years. And dear friends, we are working and we are learning under one syllabus which is framework by Rashtrasant Tukdeji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. And we are the student of different universities. But nature is a good teacher. Nature is a good teacher. And nature has no university. Nature is an open laboratory for the learning, and nature is the platform for the all subjects, because you are looking that it is a very green, but this green forest is associated with, it is also related with physics, it is also associated with chemistry, it is also associated with geology, it is also associated with geography, it is also related with chemistry, it is also related with life sciences, chemical sciences, physical sciences.
So that's why our forest is the open laboratory for all. And madam introduces me very well. I am working for 30 states of India. No doubt my institute is very small, Science College Chikhaldara, which is commonly called as Sipna College. But I am associated with 13 states of the India. In India there are 58 tiger reserves. How many? Speak loudly. How many? There should be dialogue with you, because in monologue the lecture will not go to. I am the advisor of 34 tiger reserves in India. Out of 58, I am the advisor of 44 tiger reserves. The states which are in my advisory are Tamil Nadu, Rajasthan, Bihar, Orissa, Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Orissa, etc. And I am also working in the South Africa also for cheetah's reintroduction program. So basically I am the student of botany. I am the student of botany, but I am working in the Department of Environmental Science. So there is also diversity in my service also. So we should know what is forest. As a student of science, what is the spelling of forest? मुझे सुनाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया. Very good. F-O-R-E-S-T. F means flora and fauna. O means organization. R means regeneration. E means energy. S for stratification and T for topography. Flora में botany आ गया, fauna में zoology आ गया, organization में सभी subject आ गए. Sunlight is associated with plant, sunlight is associated with water, sunlight is associated with plants. All these living and non-living organisms are associated with each other. Regeneration. तुम और हम जंगल नहीं तैयार कर सकता. Who are the regenerators? Butterflies are the good regenerators. Honeybees are the good regenerators. Arthropods are the good regenerators. Ants are the good regenerators. And with the help of pollination mechanism, regeneration of the forest takes place. E for energy. Energy dealing with the chemistry also, energy dealing with the physics also, energy is also associated with the life science subject also. Then S for stratification. Classification of all living organisms, vertebrates, invertebrates, reptiles, birds, mammals, in case of plants, herb, shrub, trees, climbers, etc. And T for topography. This topography is associated with geology. Undulating path, landscape, rocks, minerals, rivers, ocean, annual water bodies, perennial water bodies. So this forest has the great meaning: floral, faunal organization, regeneration, energy, stratification and topography. And in this forest we have the lot of scope for research, innovations, and we can contribute. Each and every student present here should contribute for the advancement, for the update of the forest ecosystem. Next please sir. Now see, anybody from you, what this picture is very self-explanatory. This picture is from Melghat Tiger Reserve. आप में से कोई बता सकता है क्या है ये पिक्चर? Anyone idea? Student from zoology can answer, student from physics can answer, students from chemistry can answer. ये पिक्चर को देखकर कौन आंसर बता सकता है? What is in your mind? ये पिक्चर क्या बात कर रहा है आपने से? तुम्हाला इकडे काहीच दिसत नसेल. हाँ, काय बघत, काय कसं करणार? हाँ, तुम्हाला तर काहीच दिसत नाहीये. हाँ,
त्या चेअर इथे नाही घेता येत का? घ्या ना इथे. 5-35 निघून जाईल तो. त्या चेअर इकडे घ्या ना सर. मला गरज नाही, मला गरज नाही. Students can shift themselves in these 3 rows. Please students. Please come here, no? Student, please Please along with chair. stand up and shift here in these 3 rows. ते चेअर इथे पण लावता लागतं. नाही ना किती मॅडम फ्री बसला तर चालते ना, सब्जेक्ट सोबत बसला ते फ्री बसा ना मॅडम. Okay, that's fine. Now everybody can observe this slide. Any single student, each student may be from chemistry or physics or botany or microbiology or zoology or physical education or language. Please explain this picture in a single line. Good sir, habitat. In the field of, in the term of environmental science or management conservation, what does it indicate? From student. Answer should be from student, not from the professors. ये आपको क्या दिख रहा है? हाँ? Botany, zoology, microbiology, chemistry, physics, geology also. Geology also. Answer should be from the student, no? There should be dialogue. This presentation should not be in a monologue form. आप बताइए, थोड़ा बात कीजिए मेरे से. हिंदी में बताया तो भी चलता, मराठी में, उर्दू में, इंग्लिश में, गुजराती में, पंजाबी में, कोई भी लैंग्वेज में बताया तो चलता. आप मेरे से बात कीजिए प्लीज. नोबडी कैन आंसर. पहला आंसर सर ने दिया कि ये ग्रासलैंड है, हैबिटेट है. हाँ, interaction with okay. Any more student from geology? Good. So it's the best watershed management by the grasses. Conservation of water by the roots of the grasses, and it plays an important role for watershed management practices because our forests have biotic and abiotic components. Roots of the grasses plays an important role to conserve the water and to store the water in the forest ecosystem. Second one, this plays an important role
to maintain the habitat for the wildlife. Next please, sir. So this picture is very important. Grasses are the engineers of forest ecosystem. Grasses are the architects of forest ecosystem. How? Grasses plays an important role to conserve the water. In the forest, there are 5 different types of water: gravitational water, chemically combined water, hygroscopic water, capillary water, and percolating water, and runaway water. All these different types of water are conserved by the roots of the grasses. Number 1. Number 2, grasses plays an important role for habitats of the wildlife. And number 3, grasses plays an important role to maintain the carbon sequestration. Carbon sequestration in the environment. So grasses are the C4 plants and they play an important role to maintain the food chain, food web. Next please. What does this picture? आपको ये पिक्चर क्या बता रहा है सर? Chemicals damaging the grasses. Anyone from geology, zoology, botany? Grasses plays an important role for the generation of soil by physical withering, chemical withering, and biological withering. So biogeochemical cycle, and by the biological withering, rocks are converted into the soil. Pedogenesis. So these are the ecological footprints. These are the ecological footprints. तो जैसा जैसा रिवोल्यूशन हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी इन द ग्रासलैंड और सस्टेनेबिलिटी इन द इकोसिस्टम विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द एनवायरमेंट. नेक्स्ट प्लीज. इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर. डॉक्टर सर का केमिस्ट्री बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. यहाँ पे एनर्जी कन्वर्शन दिख रहा है. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड चेन एंड फूड वेब. सो forest ecosystem is a best example for energy dynamics. Next please. Best example of energy conversion transformation. Next please. You will see here the student of botany and students of geology and students of geography undulating landscape, and in the undulating landscape there are ridges and furrows, and with reference to landscape there is great diversity of flora and fauna. Great diversity of flora and fauna. Next please. There is also topographical landscape. Next. This picture is also the best example of good habitat and energy flow and use of these soft grasses by the herbivores or spotted deers. Next please. It is the best example of conservation, protection, management by the biological parameters, ultimately by the grasses and grasses. Next. Next. Now this is not the current scenario. In India there are 58 tiger reserves. We are located only 52 tiger reserves. The newly created tiger reserves are Ratapani Wildlife Sanctuary is converted into tiger reserve, Madhav Tiger Reserve from Madhya Pradesh. These such new are then one is Meghamalai Tiger Reserve from Tamil Nadu. Such 6 tiger reserves are reintroduced in our India. There are 58 tiger reserves. These are protected areas. These are work under the NTCA, National Tiger Conservation Authority, New Delhi. Next please. This is Tadoba Andhari Tiger Reserve, which is 120 km from Nagpur. Next. This is Gir National Park in Gujarat. There is one zoology student. She has got appointment to train the frontline staff for preparation of herbarium, and she got salary of 75,000.
student from zoology to train the frontline staff for the preparation of herbarium only, to train the staff, and for that she got 75,000 rupees salary. She is a biologist. She is basically from zoology. So Dr. Mohan Ram sir, our Deputy Director, Deputy Conservator of Forest at Gir National Park, and Gir National Park is very important for us because lions, natural habitats are present here. Next. This is one of the important Melghat Tiger Reserve. Next. This is Satpura Tiger Reserve, very near to Nagpur, near Baitul. Next. This is Kanha Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Next. 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 This is Chitwan. Chitwan, that is Valmiki Tiger Reserve. It is the landscape in between Nepal and Bihar. Next. 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 Now what is the role of grassland? As a student of life science, as a student of chemical science, we should know what is the use of these grasslands for wildlife. Number one, grazing habitat. Number one, grazing, breeding, nesting. You know, the nest prepared by the birds are prepared from grasses. Without grass, no any bird can prepare its nest. So nesting habitat by the bird. Hiding and breeding. चीतल को बच्चा हो गया तो घास में ही छुपाना है. टाइगर को भी इवन बच्चा हो गया तो उसको घास में ही छुपाना है. Grazing, browsing, nesting, hiding, breeding, and all microhabitats are maintained by the grasses. So it's the role of grasses for wildlife habitat management. Next please sir. Next. See, here is the picture. What is this bird? Student from zoology. zoology का कोई बच्चा बता सकता है ये birds क्या है? बहिणाबाई चौधरींची कविता होती. काय कविता आहे? खोप्यामंदी खोपा, सुगरणीचा खोपा. That is Baya. And that bird select the grass Sima nervosum and Sima sulcatum. Why this bird use this grass? This grass has good mechanical strength. This grass has good elasticity, and this grass gives proper aeration, and this grass protect the eggs of the bird from the enemies. So that's why this bird use this grass for nesting habitat, and it is the best example of sustainability. अपना खुद का यूज करने के बाद दूसरों को भी ये यूज करने को देता है. इसका यूज होने के बाद ये बाकी वन्य जीवों को भी यूज करने को देता है, रेप्टाइल्स को भी देता है, बर्ड्स को भी देता है. तो ये सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन बीइंग में नहीं है. दिस सस्टेनेबिलिटी इज इन द वाइल्ड लाइफ. मेरे घर पे तो कोई मेहमान आ गया तो मेरी बीवी बोलती है कि बेडशीट बदल डालो, इन्फेक्शन हो जाएगा. तो बर्ड्स का तो बेडशीट दूसरों को यूज करने को देता है. वो जो घोंसला है वो घोंसला दूसरों को भी अपना काम होने के बाद दूसरों को यूज करने को देता है. इट्स अ बेस्ट नॉलेज शेयरिंग एंड habitat sharing and natural resources sharing habitat by the birds. Next. यहाँ पर आपको दिख रहा है ये काम मैं किया है बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका. वहाँ के जो पीसीसीएफ है ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, परतवाड़ा, डॉक्टर मालखेड़े साहब, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स. तो नागरहोले टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, BRT Tiger Reserve, Wayanad Wildlife Sanctuary, and Madhumalai Tiger Reserve. All these 6 protected areas are invaded by lantana camera. We are the expertise how to remove the lantana. After removal of lantana, see this is the before, initial and this is after. ये पहले ऐसा था. We uproot the lantana, observe the soil. Texture, color, water holding capacity, moisture content, then selection of grass species, addition of grass species, addition of grasses seed, and after 3 years this habitat is developed. So you can see here
nesting habitat and grazing habitat. Next please. Caring habitat, nourishing habitat by the spotted deer. Next. Browsing habitat. ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? Students from botany and students from zoology can answer this very well. बॉटनी और जूलॉजी का स्टूडेंट्स इसको अच्छा आंसर कर सकता है. एनीबडी फ्रॉम बॉटनी, व्हिच इज दिस एनिमल फ्रॉम जूलॉजी? जूलॉजी का स्टूडेंट बता सकता है एनिमल क्या है? इट इज नॉट काल्विट. आई विल गिव द हिंट. इट इज द डियर. इट इज द लार्जेस्ट डियर ऑफ मेलघाट. इट इज द लार्जेस्ट डियर ऑफ द मेलघाट. व्हाट इज दिस डियर? इट इज सांबर डियर. It is sambar deer. It is the male. वो क्या खा रहा है? हाँ? Botany students from botany क्या खा रहा है? Bear. Jujubas, jujuba. इसका लीव्स भी काम का, बार्क भी काम का, फल भी काम का, फ्लावर्स भी काम का, and it's a कल्प वृक्ष for all deer family. तो इसीलिए यदि टाइगर के सामने चीतल आ गया और सांबर भी आ गया तो पहला प्रिफरेंस उसका सांबर को रहेगा. Why? सांबर इज अ मिक्स वेजिटेरियन एंड चीतल ये घास खाने वाला है इससे. और चीतल टाइगर के लिए सिर्फ पोहा बन जाएगा और सांबर उसके लिए पूरन पोली बन जाएगा. तो इसीलिए उसका फर्स्ट प्रिफरेंस. थर्ड वन, इसका बायोमास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है. चीतल का वेट 25 kg होता है, इसका वेट 150 kg होता है. तो पहले वो सांबर को प्रिफरेंस करेगा और कैप्चरिंग करने में सांबर पहले पकड़ा जाता है, चीतल बाद में पकड़ा जाता है. तो इसीलिए उसका प्रिफरेंस और पावर ऑफ सिलेक्टिविटी इज वेरी गुड. नेक्स्ट प्लीज. सी, इट्स अ गुड इंडिकेटर. नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट. मिरर इमेज ऑफ द स्पॉटेड डियर इन द वाटर प्लस रोल ऑफ टॉलर ग्रासेस फॉर हाइडिंग हैबिटेट. नेक्स्ट प्लीज. इट्स द बेस्ट एग्जांपल. टाइगर prey predator relationship. Prey is there and predator is also there. And यदि आप लोग कितने लोगों ने टाइगर देखा मुझे पता नहीं, या कितने टाइगर रिजर्व में आप विजिट करते हैं मुझे पता नहीं, बट दे हैव वेरी गुड सेंस ऑर्गन. दे आर प्रोटेक्टिंग प्रिडेशन mechanism is very strong. Next please. All the wild boars use the rhizomatous and tuberous species which are present in the forest because all these are rich in proteins, carbohydrates, lipids, fats and fibers. जैसे अपन बोलते हैं कि राम सीता जब वनवास में थे तो कंदमूली खाते थे. तो all these rhizomes are rich in starch, proteins. Sorry. अपना जितना भी फॉरेस्ट है उसमें एक बल्ब होता है, डायस्कोरिया बल्बीफेरा. उसका आपने छोटा सा कण खाया सुबह 10 बजे तो अपने को भूख लगेगा 6 बजे. सुबह 10 बजे खाया हो तो इसका मतलब क्या? उसमें एनर्जी स्टोरेज ज्यादा होता है. नेक्स्ट प्लीज. ऑल इंडियन गॉड्स, दीज आर नॉट बाइसन्स. बाइसन्स आर ओनली प्रेजेंट इन अफ्रीका. इन इंडिया देयर आर नो बाइसन्स. गाइड आपको बताता कि बाइसन आ गया. आप टाइगर रिजर्व में जो घूमता है तो वो गाइड आपको यही बताता कि सर बाइसन दिख रहा है, देखो. बाइसन इंडिया में नहीं है. दीज आर इंडियन गॉर्स. नेक्स्ट. दिस इज द ब्राउजिंग हैबिटेट. दिस पिक्चर इज फ्रॉम रणथंबोर टाइगर रिजर्व, राजस्थान, and the leaves of the Anagrassis pendula are used by the blue bulls. It is the nilgai, blue bull. See the health of that blue bull. Next. These are the soft feeder herbivores. Herbivores are classified into two parts: soft feeder herbivores and coarse feeder herbivores. तृणभक्षक शाकाहारी वन्य प्राणी दो प्रकार के होते हैं, मुलायम घास खाने वाले और कोर्स ग्रास खाने वाले. तो ये सब जो है ये दीज आर सॉफ्ट फीडर. इनके लिए मार्वेल ग्रास इज द रसगुल्ला एंड गुलाब जाम. बट सांबर के लिए और गौर के लिए इनके लिए कोर्स ग्रास लगते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सी द ग्रेजिंग हैबिटेट बाय द स्पॉटेड डियर. नेक्स्ट. 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 सी दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जूलॉजी वालों के लिए काम का, केमिस्ट्री वालों के लिए काम का, बॉटनी वाले के लिए काम का. यदि समझो मैं अपने प्रिंसिपल साहब के, मैं कल आया, नाइट हॉल्ट किया, रात को खाना खाया. मुझे बाहर का खाना जनरली मैं यूज नहीं करता, मेरा एसिडिटी बढ़ गया.
या तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। फिर आज सुबह मैं कोई अपोलो के शॉप में गया, यूनियन जाइन टैबलेट ले लिया और एसिलॉक टैबलेट ले लिया। मेरे लिए अपोलो शॉप है, सांबर के लिए कहा अपोलो शॉप मिलेगा फॉरेस्ट में। सो दे हैव देयर वेल सेंस ऑर्गन। द aquatic nutritional plant Hydrilla, Chiara, Nightella, Nostoc, Anabina. These plants are present in water. Sambar used this plant as a aquatic nutritional supplementary food, but ethno-veterinary point of view, this terminology is most important. Ethno-veterinary point of view means those plants used by the wildlife for the treatment of various diseases. उनके पास तो कोई BMS डॉक्टर नहीं है, उनके पास MS डॉक्टर भी नहीं है, MD डॉक्टर भी नहीं है, खुद का डॉक्टर खुद ही है वो। तो दे हैव वेल सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन के कारण उन्होंने हाइड्रिला प्लांट को सिलेक्ट किया और अपना खुद का डाइजेशन इंप्रूव किया। बट हाइड्रिला इज द इंडिकेटर ऑफ कैल्केरिफेरस सॉइल। हाइड्रिला इज द इंडिकेटर ऑफ कैल्केरिफेरस सॉइल, वहां पे ही ग्रो होता है। नेक्स्ट प्लीज। विच इज दिस एनिमल? लिखा है मैंने वहां पे, स्वैम डियर। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज बारासिंगा। सेंट्रल इंडिया में स्वैम डियर सिर्फ मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलता है। नाउ वी रीइंट्रोड्यूस इन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड इन उत्तर प्रदेश एंड इन आसाम इन काजीरंगा नेशनल पार्क वी गॉट दिस एनिमल and in Dudhwa National Park in Lucknow, near Lucknow, we can observe this, but it is a soft feeder. But the habitat of this animal is, it shows the fawning habitat, FAWNING. What is meant by fawning? बच्चा देने के बाद बच्चा बड़ा होने तक अपने साथ ही रखता है। चीतल वैसा नहीं करता। मैंने बच्चा दिया, 8 दिन में आप खाना सीखो, प्रोटेक्शन सीखो और अपना संसार आप देखो। ये ऐसा नहीं करता, ये सारा केयर करता है। फॉनिंग हैबिटेट, उसको अपना साथ रखते ही चलता है। इट इज अ सोशल। नेक्स्ट सी, इट्स अ वेरी बेस्ट एग्जाम। इसमें कोई कंप्यूटर का स्कीम नहीं है, इसमें कोई स्किल नहीं है, कोई मैनेज नहीं किया मैंने। आप में से कोई बता सकता है एनिमल क्या है टाइगर छोड़ के? अदर देन टाइगर बाकी क्या है? दीज आर डियर्स। पहला वाला स्पॉटेड डियर, दूसरा वाला स्वैम डियर, तीसरा टाइगर। तो हैबिटेट ही अपने को बता रहा है स्वैम्पी एरिया में। स्वैम्पी वो जो फीमेल है, सेंट्रल वाला जो फीमेल स्वैम डियर है और फर्स्ट वाला जो है वो फीमेल स्पॉटेड डियर है और टाइगर। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फूड चेन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ फूड चेन। व्हाई फूड चेन? घास नहीं रहता तो कोई आ सकती है क्या चीतल वहां पे? इफ देयर आर नो ग्रास, herbivore will not come there. So grasses are there, soil is there, water is there, and because of food availability, herbivores are come there. And if herbivores are there, ultimately omnivores and carnivores will come there, and our food chain and food web and energy flow in ecosystem will maintain by the forest ecosystem. Next please. Best example है, समझो मैं छोटे सर के घर आया होली के दिन, मैडम ने मेरे को पूरन पोली खिलाया। पूरन पोली 2 खाया, 3 खाया, घी भी बहुत लिया, 4 बजे नींद आ गया। लेकिन बेडशीट फटी हुई थी, मैं सोया नहीं। लेकिन ये टाइगर के पास बेडशीट क्या है? साइनोडॉन डैक्टिलॉन, हरियाली घास का बेडशीट टाइगर ने यूज किया। और वो जो खड़ा वाला जो ग्रास है दैट इज वेटिवर ग्रास, उसमें से ठंडी हवा आता है। आपको समर में एसी मिल गया, कूलर मिल गया, पानी मिल गया, उसको कहाँ मिलने वाला है ये? तो खस ग्रास आप समर सीजन में खस परफ्यूम यूज करता है, इट्स कूलेंट। तो टाइगर के लिए कहा है ये सब अवेलेबिलिटी। ये दिस पिक्चर इज फ्रॉम रणथंबोर टाइगर रिजर्व। वेटिवर ग्रास गिव्स कोल्ड एयर एंड साइनोडॉन ग्रास गिव्स फॉर रेस्टिंग हैबिटेट। सो यूज ऑफ ग्रासेस फॉर रेस्टिंग एंड हाइडिंग एंड ब्रीडिंग हैबिटेट। सो जितने भी जूलॉजी के बच्चे हैं, जितने भी बॉटनी के बच्चे हैं, रीड योर जंगल फर्स्ट, रीड योर जंगल, ऑब्जर्व योर जंगल एंड नोट डाउन द फील्ड नोट्स, इकोलॉजिकल नोट्स एंड राइट डाउन द कंसेप्ट नोट
And my humble request to postgraduate student, please write your research paper. Please write your research paper on the basis of only field research work, not on the copy paste. आपको रिसर्च करना है फील्ड में, और वो आपको फील्ड में देखने को मिलता है. ओनली यू हैव टू इंटरप्रेट इट ऑन द पेपर. नेक्स्ट, इट्स अ गुड कैमोफ्लेज. Good camouflage. Roll of leaves of the color of the grasses, leaves of the grasses, then stem of the grass and leaves of the grasses, just like to the skin of tiger. It's a camouflage. Roll of fauna in camouflaging. Next, we have prepared some habitat management program. I am the advisor for 13 states of India only for preparation of policy documents and to give the training to the forest frontline staff for wildlife habitat management. Basically, I am the student of botany. अपना जो बेसिक सायन्सेस आहे these are most important. आपले जेवढे काही बेसिक सब्जेक्ट्स आहेत ना, त्याला फक्त कमिटमेंट, डिवोशन, हार्डवर्क आपल्यामध्ये जर असेल तर यू कॅन बी ॲट द टॉप. मेरा चिखलदरा तो छोटासा आहे, विहिरीत गळीत असल्यासारखं आहे. माझं कॉलेज पण खूप छोटं आहे, पण एवढ्याशा कॉलेजमधून जर आपल्याला 16 स्टेटचे लोक, CCF लोक, PCCF लोक जर आपको बुलाता है तो इसका मतलब क्या है? नॉलेज इज अ पावर. Knowledge is the power, and my humble request to you, please go in the field and do your research in the field if possible. Next. See, these are the training programs, and the madam which is just near to me, she is from DCF Odisha, Debrugad Wildlife Sanctuary. She is MSc Botany. Anshu Das madam, and she is very committed field officer, and now she has got promotion to the CCF now. Next please. This is the picture from Nagarwali Tiger Reserve. It is the school of grassland management in the field. It's a school of grassland management. आपको नेचर में ही सब सीखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. इट्स अ स्कूल ऑफ ग्रासलैंड मैनेजमेंट इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान. नेक्स्ट. It is in the Satpura Tiger Reserve, Bihar. L. Krishnamurthy sir. Those officers in the cap are IFS. L. Krishnamurthy from Tamil Nadu, and now currently APCCF Madhya Pradesh state. Now he is the boss of all tiger reserves of Madhya Pradesh. But sir invited me 3 times in a Satpura Tiger Reserve. Next please. Dr. H.S. Pabla, वो जो पगड़ी में दिख रहे ना, H.S. पाबला, उनका स्टेटमेंट है, प्रोफेसर आप कान्हा में आ जाओ, मेरा घास का तबीयत ठीक नहीं. कान्हा में आ जाओ, मेरा घास का तबीयत ठीक नहीं. इसका मतलब क्या है? ओवर ग्रेजिंग, डिग्रेडेशन, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, यूटिलिटी इंडेक्स कम हो गया. चीतल बहुत है लेकिन घास खाने को नहीं है लेकिन पैलेटेबल ग्रासेस नहीं है. तो इसीलिए मुझे हर साल बुलाते हो. और बाजू में मेरे जो है डॉक्टर एस.आर. यादव, दोज पीपल्स आर फ्रॉम बॉटनी. डॉक्टर एस.आर. यादव सर मेरे साथ आए थे, यहाँ से नागपुर से बैठे थे, तो हम 5 दिन जंगल में पैदल घुमा. और वो जो कैमोफ्लेज ड्रेस में है, शी इज IFS DFO, डेप्यूटी डायरेक्टर, कान्हा टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज द ट्रेनिंग बैच फ्रॉम कैसफॉस, आसाम. ACF का बैच है ये, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम पास हो गया. ट्रेनिंग लेने के लिए ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में आ गए. नेक्स्ट प्लीज. दीज आर ऑल IFS पीपल्स. जैसा अपना रिफ्रेशर कोर्स होता है, ओरिएंटेशन कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, वैसा IFS का 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. उनको मैं एज ए रिसोर्स पर्सन था टू गिव द ट्रेनिंग फॉर हाउ टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ग्रासेस फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैनेजमेंट. नेक्स्ट प्लीज. Workshop on removal of lantana and ecological restoration after operating of Ecotourism in Karnataka. ये वर्कशॉप 2 जगह पे रखा था, मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट. दिस इज द एक्सपर्टाइज सर्विसेज बाय द बॉटनी स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर द एक्शन प्लान. ये ट्रेनिंग आप स्टाफ को दे सकता है. सो दीज आर योर स्किल्स. बॉटनी का स्किल है ये. नेक्स्ट. These are the services from geology, remote sensing, GIS,
remote sensing and applications of remote sensing and GIS to know the mapping of grassland. तो हर इसमें मैंने 2 जियोलॉजिस्ट अपॉइंट किए हैं, उसको एक ही काम है, जियो मैपिंग, जियो ट्रैकिंग, रिमोट सेंसिंग, GIS. तो उसको मैं 40,000 रुपये महीना देता हूँ. तो मेरे अंदर करीबन 40 बच्चे काम करते हैं. सो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसको जरूरत है उसको काम देना. नेक्स्ट, सी अर्लियर वाज इन मानसून, नाउ दिस इज इन द रेनी सीजन. नेक्स्ट, दिस इज द एक्सपर्टाइज सर्विसेज ऑफ जियोलॉजी. नेक्स्ट, this is the expertise services of remote sensing. Next, see, itself grassland itself acting as a habitat, grazing, browsing, nesting, hiding, all these habitats are maintained by the grassland. Next, best role of grasses for water conservation. Thembe thembe kade sache, these are the water droplets, and grasses have the motor cells. Grasses have the motor cells. आप देखो हर घास का जो पत्ता होता है वो झुका हुआ रहता है. कितना भी जोर से हवा आया, पानी आया, वो हवा से हिलेगा लेकिन आएगा अपनी जगह पर ही. आदमी का वैसा नहीं है. आदमी सारा इगोइस्ट होता है. किसी ने डांटा तो बोलते मेरे को क्यों डांटा, और प्रिंसिपल साहब ने बोला तो मेरे को 3 आदमी के सामने क्यों बोला, अकेले में तो बोल सकते थे मेरे को. घास के पास वैसा नहीं है. बारिश का सीजन आया तो भी मैं आई एम द ग्रास, विंटर का सीजन आया तो भी आई एम द ग्रास, समर का सीजन आया फिर भी आई एम द ग्रास. और दे हैव गुड इलेक्ट्रिसिटी. जिस आदमी में लौचिकता ज्यादा है उसका प्रोग्रेस अच्छा होता है, और जो आदमी में ईगो होता है आई एम द बेस्ट, आई एम द एक्सपर्ट, वो जीरो हो जाता है. वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी आर द स्टूडेंट. नेक्स्ट, दिस इज द रोल ऑफ जियोलॉजी. Water sources. Next, this is the shade loving grasses under the shade of Zizopus. शेड में रहने वाले घास अलग, लाइट में रहने वाले घास अलग. उस तरफ से हर्बीवर्स का भी मूवमेंट बदलते रहता है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, स्मॉलर, इंटरमीडिएट एंड टॉलर. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. ये ग्रास दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है. इट इज अ ब्यूटीफुल ग्रास. WCT का डायरेक्टर बोलता है अनिश जी अंडेरिया, प्रोफेसर ये ग्रास तो सब ग्रास में ब्यूटीफुल है, फिर आप क्यों उखाड़ रहे हैं इसको? वी हैव टू इरेडिकेट इट, uproot it, because it is exotic. Its origin is not from India. It is developed by Agriculture University for stall feeding. स्टॉल फीडिंग के लिए यूज किया है, एंड इट इज हैविंग अफ्रीकन ओरिजिन. यदि इसका परसेंटेज बढ़ गया तो नेटिव ग्रासेस खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट. 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 हाँ देखिए, सांबर ब्राउज कर रहे हैं, चीतल ग्रेस कर रहे हैं, और घास का उपयोग नेस्ट के लिए किया है. नेक्स्ट, इट्स एसोसिएशन बिकॉज ऑफ द ग्रासेस. नेक्स्ट, इट्स अ मेगा हर्बीवर. काजीरंगा नेशनल पार्क में जो डायरेक्टर मैडम है, शी इज फ्रॉम बॉटनी, डॉक्टर सोनाली घोष मैडम. वेरी ग्रेट चैलेंज. दिस एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ आसाम. वहां पे पोचिंग बहुत बड़ा होता है, तो इसको बचाने के लिए इट्स देयर आर गुड आर्मी एंड दे हैव गुड पावर्स. उनको पूछना नहीं पड़ता कमिश्नर को कि मैं मुरक्कब सबको गोली मारूं क्या. नहीं, वो मैं राइनोस के पास दिखा तो मुझे शूट कर देगा वो फील्ड डायरेक्टर को भी नहीं पूछेगा वो, क्योंकि उसको पावर दिया है. नेक्स्ट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज. दीज आर एंडेमिक टू गडचिरोली, आसाम एंड छत्तीसगढ़. बट सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग जीन है गडचिरोली का. ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट, दी वाइल्ड एलिफेंट, दीज आर दी कोर्स फीडर. दिस पिक्चर इज फ्रॉम बंदीपुर. नेक्स्ट, दीज आर